हेलो हेलो एवरीवन, हेलो। तो आज हमें स्टार्ट करिया बीईडी एग्जाम रो कौन अछि ना देखो महा रिविजन। ठीक अछि, जेमे देखि बीईडी एंट्रेंस पे क्वेश्चन अछि, वन बाय वन देखिबा। ता पूर्व जो माने हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन सेट करनो, काहेना हमरो प्रत्येक एग्जाम पे एमती डिस्कशन करा जिवो। ठीक अछि, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन जदी चाहूच ताल निहते गोटे लाइक टे करो, निज सांग मन को शेयर करनो। आ बाकी रहले व्हाट्सएप ग्रुप हमर गोटे बना है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स रे लिंक अछि, जाकि जॉइन करना तुम मन पे हेल्प हो, कहना जेते हम कभी पीपीटी किंबा पीडीएफ रहउछि से गुडा तुम मन बाबू पठा जिवो। ठीक अछि, जमते कि प्रथम क्वेश्चन अछि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग best enhances divergent thinking in students। तो एटी चारटा ऑप्शन अछि, चारटा ऑप्शन कोटा आंसर हो। आंसर हो प्रथम क्वेश्चन का सी ऑप्शन, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। ठीक अछि, नेक्स्ट अछि देखो तापर आज हम 50टा क्वेश्चन आंसर 50टा डिस्कशन करिया, फुल डिस्कशन करिया। सितमा लास्ट पर्यंत रुह हम संगे। तुम देखो अछि, फाइन मोटर स्किल्स आर मोस्ट एसोसिएटेड विथ ए ऑप्शन जंपिंग एंड रनिंग, B option होची solving puzzles and bottoming charts, C option emotional expression, D option language development। कोटा आंसर आंसर हो जिवो B option solving puzzles and bottoming charts। टिके टिके रफ खाता लिखि तो तुम ପାଇଁ ही बेस्ट हो, काना एटा PIQ क्वेश्चन आ पूरा खोजा खोजा क्वेश्चन अछि। ठीक अछि, प्राय क्वेश्चन पढ़िला भले एग्जाम रे, तेन टिके टिके लिखिनो। जने देखो 3 नंबर अछि, अकॉर्डिंग टू पंडित the law of readiness by readiness implies option A is the learner must be punished for mistakes. A learner will only learn when physically mature. Learning occurs best when the learner is mentally prepared. D option is learning is possible only through the insight. Would have answer. Answer is C option. Learning occurs best when the learner is mentally prepared। ठीक ଅଛି, next देखियो under NEP 2020 the 3 to 8 year age group is covered under which stage? Preparatory stage, preparatory stage, middle stage, and foundational stage, secondary stage। What have answer? Answer is better C option foundational stage। ठीक ଅଛି, तापर अछि देखो under the RTA Act the age group entitled to free and compulsory education is 3 to 10 years, 6 to 14 years, 5 to 13 years, 4 to 16 years। what are answer? Answer is B option 6 to 14 years। टे कलर चेंज कर दवा, जो मन को आसुची से माने कमेंट रे निया देबे जणा। ठीक अछि, कमेंट रे जणा, देखिया केते मन आछि कोन कोन। तापर अछि scaffolding। Scaffolding in education refers to building new school buildings, providing support to learners until they can perform independently, memorizing long content, giving punishment to learners। कोटा आंसर scaffolding in education refers to कोटा माने जो scaffolding education अछि सेटा रेफर कोटा करूछि, रेफर करछि बी ऑप्शन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू लर्नर्स until they can perform independently। ठीक अछि, independently। तापर अछि देखो सर the word education is derived from which Latin word? एजुकेशन टा को लैटिन वर्ड रो डिराइव होछि, एजुकोर, एजुकेशो, एजुकेट, तापर एजुकेयर। तडी एजुकेयर इज वन आंसर। ठीक अछि, काना एजुकेशन एटा होछि हमरो इंग्लिश वर्ड और लैटिन वर्ड होछि एजुकेयर। तापर अछि ए कॉमन लर्निंग इशू इन ए crowded classroom is use of ICT,
uniform learning, yes, individual attention deficit, ତାପରେ cooperative learning କୋଉଟା ହବ ଆନ୍ସର ଏଟାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସି ଅପସନ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଟେନସନ ଡିଫିସିଟ। ତାପରେ ଅଛି the affective domain mainly includes affective domain ଟା କଣ include କରୁଛି physical coordination ତାପରେ cognitive process attitudes and values technical skills କୋଉଟା ହବ आंसर is attitudes and values C option। तापर से देखो inclusive education promotes uniform curriculum only, homogeneous group learning, diverse learner engagement, fixed classroom strategies। what is your answer 10 number answer is C option diverse learner engagement C option। okay one by one मत लास्ट को कमेंट रे जणाइबो 50 रु कार केतेटा ठीक हैला ठीक अछि काना एटा पूरा महा रिवीजन तमर करा जाउछि रिवीजन सहित मिसिबो ठीक अछि मते नियाते बे लास्ट को जणाइबो कमेंट रे केतेटा 50 केतेटा ठीक हैला ता अनुसार जणा पड़ितो जनरल अवेयरनेस और टीचिंग एप्टीट्यूड केते अनबर ठीक रहउछि ठीक अछि तापर अछि देखो गिफ्टेड चिल्ड्रन आर मोस्ट लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम standardized instruction rigid curriculum enrichment programs delayed evaluations what answer answer is your C option enrichment programs जो माने पढिछन निहाते बे समान को आसुथिबो ठीक अछि तापर अछि देखो the root meaning of education implies to draw out to control to train to instruct what answer भले जणा कमेंट रे आंसर हो जिवो ए ऑप्शन टू ड्रॉ आउट ओके तापर अछि देखो क्रॉस मोटर स्किल्स include ऑप्शन ए होछि holding a pencil tying shoelace skipping and hopping buttoning a shirt what answer एटा सठिक उत्तर हो जाउछि स्किपिंग एंड होपिंग सी ऑप्शन ओके तापर अछि देखो which is a solution to overcome learning difficulties in school uniform teaching peer tutoring एटा poor tutoring हेतु सॉरी लिखला बेले भूल हो तो ठीक अछि overcrowded classrooms ignoring weak learners what answer is your poor tutoring okay B option तापर 15 अछि reinforcement encourages the likelihood behavior while punishment eliminates it permanently always fails decreases the likelihood of behavior has no effect what answer सठिक उत्तर होछि सी ऑप्शन decreases the likelihood of behavior तापर अछि देखो which domain of Bloom's taxonomy deals with reasoning and memory option A cognitive affective psychomotor social answer is एटार A option cognitive तापर अछि देखो which is not a stage in NEP 2020 structure foundational secondary professional preparatory कोडा आंसर सठिक उत्तर होछि प्रोफेशनल ठीक अछि एटा पार्ट नुह स्टेज रो पार्ट नुह ठीक अछि तापर अछि देखो which strategy supports learners with different abilities तो जो माने सब्सक्राइब करना निया चैनल को सब्सक्राइब करना एमती आहुरी भी एग्जाम जो आसीबो समानंकर निया वीडियो आसीबो एमती ओके रिवीजन हिसाब रे जदि कोटा भी डाउट रोज मते व्हाट्सएप रे पचारि परिबो ग्रुप रे जॉइन करिवि डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि कमेंट रे भी पिन कर देबी ठीक अछि जॉइन करिवि मते पचारि परिबो किबा कोनोसी काउंसलिंग असुविधा रहउछि जहाँ भी असुविधा मते निया जणाओ ठीक अछि तबे देखो फिक्स्ड ग्रुपिंग activity based learning monologue teaching lecture only method एटा सठिक उत्तर होछि बी ऑप्शन activity based learning तापर अछि देखो the NCF is developed under the guidance of Act NCT NCERT तापर CERT एटा सदा बेले मन रखितो एटा प्रायतः क्वेश्चन आसे जहाँ भी हो जहाँ भी एटा क्वेश्चन आसो
आखि मोजिकी एनसीईआरटी ही मारिदेव कौन एनसीईआरटी मारिदेव प्राय क्वेश्चन एमती ही आसे समस्त डाउट एटा सठिक उत्तर होची एनसीईआरटी टीम टीचिंग involves one teacher per subject no planning at all teaching without assessment teachers collaboratively planning 20 number सठिक उत्तर होची डी ऑप्शन टीचर collaboratively planning a teacher uses visual aids and real objects in a lesson. This approaches supports which type of learners most auditory, kinesthetic, visual, linguistic. तो 21 नंबर सर्टिफिकेट रही सी ऑप्शन विजुअल विजुअल को दिया जाए ठीक अच्छे लेसन रे तापर अच्छे देखो व्हाट डज फॉर्मेटिव असेसमेंट एम टू डू रैंक स्टूडेंट certify final achievement, conduct board exam, provide ongoing feedback to improve learning. 22 number certificate D option provide ongoing feedback to improve learning. In Piaget's theory, the ability to conserve develops during which stage? Sensory motor, pre-operational, concrete operational, formal operational. Would have answer? Answer is 23 number C option concrete operational. Which method best suits constructive based learning, project based learning, dictation method, rote learning, lecture method. 24 number answer is A option project based learning. 25 number which factor is most important for inclusive education? Equal examination pattern, respect for learner diversity, identical teaching style, fixed curriculum. 25 नंबर आंसर है जो बी ऑप्शन रेस्पेक्ट फॉर लर्निंग डाइवर्सिटी ये देखिए देवर काले किए मेसेज एरिया कर दिए तो ना तापर आगो बढ़िया ठीक अछि तो चेक कर दियो चेक कर दियो ओके तो तापर नेक्स्ट अछि a multi-grade classroom typically consists of students of the same age, students of the same achievement level, students from different classes and grades, students with only special needs. 26 number answer है जो C option students from different classes and grades. तापर अच्छे which of the following is an example of in intrinsic motivation? Studying to avoid scolding, reading for enjoyment, learning due to poor pressure, practicing एटा पढ़ी परिबा practicing पढ़ी परिबा due to reward. 27 नंबर आंसर है बी ऑप्शन रीडिंग फॉर एंजॉयमेंट सदा एंजॉयमेंट पे ही पढ़िया आवश्यक एना मार्क टा हुए तो तमरो कैरियर गढ़ी पारे किंतु पाठटा एंजॉयमेंटली पढ़ले तुम माइंड को एमती माने कौन कहले मन रही पढ़ो जे तुम मन रही ठीक अच्छे सब एंजॉयमेंटली एजुकेशन धर तब अच्छे व्हिच इज ए क्यू एस्पेक्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग की एस्पेक्ट कोटा रिफ्लेक्टिंग टीचिंग रो repeating lectures ignoring student feedback memorizing content self evaluation of teaching practices 28 number एटर आंसर हो डी ऑप्शन सेल्फ इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग प्रैक्टिसेस तापर अछि द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू स्किनर पैकेट थ्रोंडाइक विगोटिस्की 29 नंबर आंसर जो डी ऑप्शन विगोटिस्की तापर व्हिच थ्योरी emphasizes learning through observation operant condition by conditioning classical conditioning social learning theory trial and error प्रायतः पिलाने ट्रायल एंड एरर दे ठीक मारी दियंते तांगु लागे कोन केजान किंतु ट्रायल एंड एरर रे ठीक मारन किंतु एटा सठिक उत्तर है जो सोशल लर्निंग थ्योरी ओके
तापर अछि नेक्स्ट देखो what is the primary goal of continuous and comprehensive evaluation CCE जोटा को हमें कहूँ continuous and comprehensive evaluation option A prepare students for competitive exams evaluate only academic performance conduct monthly unit tests access all aspects of a student's development 31 number answer is your D option access all aspects of a student's development तापर देखो which of the following best supports activity based learning hands-on experiments silent reading lecture method memorization tests एटर आंसर हो A option hands-on experiment तापर देखो according to Kohlberg moral development in children occurs in random order isolated experience declining stages linear stages कोड़ा आंसर 33 नंबर आंसर हो D option linear stages तापर देखो which learning theory emphasizes the role of reinforcement humanistic theory behavioristic theory cognitive theory social learning theory 34 number answer हो B option behavioristic theory the concept of readiness to learn is associated with Skinner Piaget Thorndike Maslow कोड़ा आंसर आंसर इज सी ऑप्शन थर्नडिक जदि को आंसर टा भूल रोचे निहाते कमेंट रे जणाओ ठीक अछि तापर अछि देखो व्हिच इंस्ट्रक्शन नाउ स्ट्रेटजी promotes critical thinking most effectively project work dictation drill exercises note copying एटर आंसर हो ए ऑप्शन प्रोजेक्ट वर्क तापर अछि देखो constructivist classrooms are characterized by learner-centered activities, passive listening, rote memorization, uniform outcomes. एटा तुम पे टैक्स रहला एटा तुम निजे कमेंट रे जणाओ ठीक अछि नेक्स्ट को हम जिबा under NAP 2020 vocational education is to be introduced from which grade को ग्रेड 8 10 6 12 एटर आंसर जो सी ऑप्शन ग्रेड 6 the best way to support children with dyslexia is to provide multisensory reading materials, give them extra homework, ignore the difficulty, ask them to write more. 39 number answer is option provide multisensory reading materials. The term learner autonomy refers to learners taking responsibility for their own learning teaching without a teacher, learning in isolation, freedom from rules. 40 number answer is option learners taking responsibility for their own learning. According to Jean Piaget, the ability to understand the conservation of mass and volume develops during which stage? Preparational, concrete operational, sensory meter, formal operational. Could have answer. Answer is B option concrete operational. Which of the following strategies promotes higher order thinking? Memorization techniques, recitation of facts, problem solving activities, routine practice, exercise. Right number answer is C option problem solving activities. Can I eat a happening? B भी हबनी एटा ही सीटा हबो काना D भी हबनी तापर देखो what is the primary purpose of formative assessment formative assessment जो पिलाओं पे करा होची छोटो छोटो पिलाओं पे जेमि अछंती अष्टम नवम रे तो कोदि पे करा होची कोन प्राइमरी पर्पस रोच to assign grades to rank students against each other to provide ongoing feedback to improve learning to judge students final performance there is some answer is C to provide ongoing feedback to improve learning on assessment जो formative assessment रे एग्जाम कले कोन माने रहुची फीडबैक नेकी आउट रे इंप्रूव करा जाय पारिबो की लर्निंग को सेटा देखा जाय ठीक अछि ना कि मार्क ग्रेड एगुडा देखा जाय नि सेते काले कोठी को असुविधा रहि जाउछ ता फीडबैक नेकी लर्निंग को इंप्रूव करा जाय ठीक अछि ताबे दिन नेशनल करिकुलम
framework NCF is developed by NCT, NCERT, UGC, SCERT. ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି NCERT ସଦାବେଳେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥାଉ NCERT ହିଁ ଆନ୍ସର ହବ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡୁଛି ଦେଖ ଦିଥର ଖଣ୍ଡେ ରିପିଟ୍ ହେଲାଣି ଠିକ ଅଛି। NCERT ଆନ୍ସର ଏଇଟା ମନେ ରଖିତ ନିହାତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତାପରେ which of the following is an example of intrinsic motivation ଏଟା ବୋଧେ କରିଥିଲେ ଡବଲ ଥର ହେଇଯାଇଛି ବଟ୍ ଦେଖିଦେବା ଠିକ ଅଛି। 45 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ସେ ଲର୍ନିଂ ବିକଜ ଇଟ୍ ଇଜ ଏନ୍ଜୟେବଲ୍ ନାଇଁ ଏଇଟା ଡବଲ ଥର ହେଇନି ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି ଷ୍ଟଡିଂ ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ reading to earn reward, learning because it is enjoyable, competing to win a prize. এটা answer is learning because it is enjoyable. তারপরে আছে দেখো in linguistics theory the zone of proximal development JPD refers to a child's ability to solve problems independently, a child's ability to solve problems with guidance, a child's readiness to learn, a child's behavior in structured environment. Answer কোটা হবো ভালরে ভাবো। आंसर ZPD ର କଣ ରେଫର୍ସ କରୁଛି ଜୋନ୍ ଅଫ ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ ରେଫର୍ସ କରୁଛି a child's ability to solve problems independently. Okay, ତାପରେ ଅଛି ଦେଖ which of the following is characterized of learner centered classroom. Teacher is sole source of knowledge, students are passing recipients of information, students actively engage in their learning, learning is standardized for all students. Answer of C option, students actively engage in their learning. In the context of NEP 2020, foundational literacy and numeracy are emphasized for which age group? which group में emphasize କରାଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି which group में ଏଟା ପ୍ରାୟତଃ ବି ପଡେ क्वेश्चन 6 ରୁ 8 ବର୍ଷ ଠିକ ଅଛି 6 to 8 years. Okay, B option of answer. ତାପରେ ଅଛି which of the following best describes informative assessment. କୋଟା ଏତିକ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଅପସନ ଅଛି କୋଟା ବେଷ୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛି ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯୋଉ କରାହଉଛି ଏକ୍ସାମ. It is used to assign final grades. ଏଟା ବି ପଛରୁ ପଢିଥିଲେ ତମେ ନିହାତି ମନେ ରଖିଥିବ ବୋଲି କହିପାରିବ. It is used to assign final grades. It measures a student's learning progress over time. It compares students' performance against others. It only involves written exams. Good answer. Answer is B option. It measures a student's learning progress over time. से जो टाइम भितर गोटे स्टूडेंट रो लर्निंग प्रोग्रेस टा केतिकी हेछि सेट मार्क दिया पे तार अछि लास्ट क्वेश्चन एटा पहिले माने नियाते लाइक करी निजो संग माने को शेयर करी कि हम व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन करनियो टेलीग्राम चैनल रे भी जॉइन करनियो जहाँ भी डाउट रोची पचार सब्सक्राइब करनियो चैनल को बेल आइकन पर नोटिफिकेशन सेट करना जेतेले भी हमरो वीडियो अपलोड होइछो तम पाक फर्स्ट नोटिफिकेशन जिवो देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. Learners with diverse needs are integrated into regular classrooms. Students are taught using a uniform approach. The curriculum is flexible to meet individual needs. Teachers are trained to handle diverse learning needs. Answer is 50 रो B option. Students are taught using a uniform approach. ओके एति थिला तमरो क्वेश्चन 50 टा आनिथिले एतिकरु निहाते भाबे काली एग्जाम रे पढिथिबो भलरे करनियो निजो सांग मान पाकु मध्ये शेयर करनियो रहिले जय जगन्नाथ. बाकी रहिला जदि डाउट रोजी कमेंट रे पचारि परिबो किबा हम व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन करी पचारिबो किबा हमरो टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करी पचारिबो तम खुशी ठीक अछि. प्राय तो पिला कमेंट रे जणांती निहाते जणा मु रिप्लाई देबी. ओके जय जगन्नाथ रहिले लास्ट क्वेश्चन जो मान देखिछ धन्यवाद.